I think we're live. Probably let's start. Just waiting for a confirmation if we are live. Right. Hello and welcome to yet another engaging and informative session here on Aakash EduTV. Today we have with us Mr. Nabeen sir. Nabeen sir has a decade-long experience in teaching and mentoring students for NEET and JEE, and we are very excited to have him with us today to share his tips. Welcome to the show, Nabeen sir. Hello, good evening, everyone. Thanks, Payal ma'am, for having me here. Honor and privilege both. Thank you so much. We are indeed very excited because the topic today is a very engaging one, a very pertinent one, which is around NCERT and the importance of NCERT in physics for NEET preparation. But my dear viewers, before we deep dive into our topic today, I'll just take a few minutes to explain to you all about Aakash EduTV. So Aakash EduTV is an initiative from the House of Aakash in collaboration with Airtel DTH, where we have launched two channels on Airtel DTH, channel 467 and 478. Channel 467 is for JEE and Foundation, and channel 478 is for NEET. So now you get the best of Aakash faculty come and explain to you your concepts for JEE and NEET right to your home. That's right. So all you need to do is switch on the TV, and there you have the expert tips, expert coaching from the faculty at Aakash. So this Aakash EduTV is available to you at a highly affordable rate of less than what it costs you to have a cup of tea. That's right. So at 8 rupees 23 paise per day, you can get access to this wonderful content available to you here on Aakash EduTV at channel 467 and 478. Now you might be wondering why Aakash EduTV, right? So what is the need for Aakash EduTV when there are other options available? Now this was conceptualized like a gap, right, Nabeen sir, to build bridge the gap between coaching and school. So many a times, I think the faculty has heard it from the students that what is taught in school and what is taught in the coaching, there is a little bit of a gap. So to bridge that gap, Aakash EduTV helps you prepare essentially to get ready for the real coaching experience. So अब आकाश की 33 साल की पढ़ाई आपके घर टीवी पे आई at a very, very affordable rate of 8 rupees 23 paise per day. So all my dear viewers who've just joined in, on Airtel DTH, there are two channels, 467 and 478, that you can access to study from the best of Aakash faculty right from home on your TV set. To subscribe, all that you need to do is give a missed call on 9154-052467 and you will be ready to start. For those of you who do not have the Airtel DTH subscription, this is your cue. You might want to take the Airtel DTH subscription so that you can access Aakash EduTV's wonderful channels, channel 467 and 478. Now, with that done, it is time, Nabeen sir, for me to straight away come to the very pertinent topic that we are discussing today on the importance of NCERT. And as the name of the topic is, the topic today's webinar is ignoring NCERT risky for NEET preparation? So I think the background to this is that students are not really able to digest the fact, or rather I would say they're not convinced, Nabeen sir, that NCERT पढ़ के हो जाएगा. एक तो स्कूल में भी टीचर्स बोलते हैं कि NCERT से नीट की पढ़ाई नहीं होती है, फिर कोचिंग में भी कोई NCERT से नहीं पढ़ाता है, और NCERT का जो मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो सारे सब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, और नीट हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है. तो एंड NCERT CBSE बोर्ड का होता है, एंड नीट में सारे बच्चे होते हैं दूसरे बोर्ड्स के. तो ये सारे रीजंस के चलते आई थिंक बच्चे जो है ना इस चीज को मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या उनके कन्विक्शन नहीं आ पा रहा है कि NCERT करने से उनकी नीट की पढ़ाई हो जाएगी. तो आज हम ये मुद्दा आपके पास लेके आए सर. प्लीज हेल्प आवर डियर स्टूडेंट्स get an answer to this question that really bothers them.
Payal ma'am, once again, thank you very much. But on a personal ground, since last 1.5 decades, my objective examination preparation, I have been practicing it. और आज जो question है, I got a long answer question, but I think I'll try to justify it. By the way, it's really appreciable कि जितने भी questions आपने put किया है, all are very relevant. Or basis my experience of more than 1.5 decades, I can confidently say that these are the questions which haven't been methodically answered so far in any platform. And today we are going to clarify every aspect of this. Yes, every aspect of the question. मुझे पता है कि जो हमें देख रहे हैं, the question that you have raised, they must have started getting this feeling कि oh, यही तो मेरा question था. All right, so to answer these questions, let me start with the question itself. That will be interesting. Yes. Yes. हम जो फिजिक्स टीचर हैं पायल मैम, हम बहुत बदनाम हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए. So let me live up to reputations. So the question is, there's a very genuine question. Let me start with this to all the viewers. NEET Physics के लिए NCERT क्या really useful है? In other words, क्या NCERT में से सवाल आते हैं in the NEET examination? And the answer is yes. So the first thing, let me clarify, NCERT में से questions आते हैं when it comes to NEET, physics या और subjects भी, but right now let's just concentrate to physics. So I hope all my viewers have heard this statement that Naveen sir has made कि NCERT से सवाल आते हैं NEET के पेपर में. तो अभी we've heard it from you. Exactly, and without any doubt, मतलब अगर आप मुझे बिल्कुल गहरी नींद में से भी उठा के अगर पूछेंगे कि is question from NCERT important for NEET, my answer would be yes, without a single break. Okay. एक काम करते हैं, let me throw one more question this time to all the viewers और मुझे उनका comment चाहिए. I want the comment in the comment box. फटाफट comment box में लिखें कि NEET 2020 में कितने questions NCERT में से आए थे. In other words, how many questions from NCERT occurred in NEET 2020? I want this answer in the comment box. Payal ma'am, I think you'll help me in that. Yes, absolutely. I want to tell Bhaskar Gowda, who's just asked in the chat right now. So is NCERT enough? First, we'll come to that, Bhaskar, and Aniket will answer your questions as well. But first and foremost, please answer this question in the comment box. What do you think? Last 2020 के नीट पेपर में NCERT से कितने क्वेश्चंस आए थे, राइट? यही है सवाल आपका. Yes, exactly. Sir. This is my question. और जो भास्कर ने सवाल पूछा है, you just wait. जो क्वेश्चन आपने पूछा है, today's webinar is entirely based on that, and you would really benefit from today's session. अच्छा, बात ये है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो you need to be aware of these facts. ये कोई out of the context, out of the syllabus question नहीं पूछा है. The question is, how many questions from NCERT had occurred in NEET 2020? I'm talking about physics, and this is purely a contextual question. And if you are preparing, this much amount of awareness is required and it is expected. It's nothing beyond the expectation. Naveen sir, I'm getting a lot of responses. Harsh Jaiswal says 2. Harsh Chauhan says 175 plus. Okay. Harsh Chauhan, I would like to say, let's stick in physics. Yes, okay. Only in physics. Right. Then somebody says 0. I think Krish Bura says 0. Sakshi Dawale says 150. I think you probably might want to re-ask this question only in physics. That's not a problem. Even if it is 150, then I can make a simple guesswork. I'll divide by 4, something like that. But whatever it is, ek kaam karte hain, the correct answer of this I'll reveal in a short while in this webinar itself. Now, let's proceed further. One aspect we have cleared, basis the response that I got from the students, it's very clear that NCERT is a very dependable and indispensable resource. Right. You can't risk your preparation by avoiding it, or if not avoiding,
then simply by superficial learning, you can't risk your preparation. Conclusion है कि selection चाहिए तो NCERT पढ़नी है और बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है. Let me repeat it again. You want selection in NEET तो आपको NCERT पढ़नी है और बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है. Right, Naveen sir, I will reiterate this point. I think बच्चों के responses से भी यही समझ में आ रहा है कि they all seem to know कि NCERT से सवाल आते हैं, and I think somewhere they know कि NCERT पढ़नी है. But ये आपने बहुत ही pertinent point बोला है कि केवल superficially पढ़ने से नहीं होगा, आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है NCERT. I think that is how important it is. Yes, कैसे पढ़नी है? Today's discussion is going to happen. But you know, Payal ma'am, there is a big tragedy in this NCERT story. कि every student knows कि NCERT बहुत important है. But then I just wonder why don't they take this piece of advice with that required sincerity कि वो NCERT को अच्छी तरह से क्यों कवर नहीं करते. जो भी व्यूअर्स है ईमानदारी से एक बार सोचिए. दिस टाइम आई डोंट वांट योर रिस्पॉन्स. ओके, ईमानदारी से सोचिए, क्या आप रिक्वायर्ड जस्टिफिकेशन एनसीईआरटी को दे रहे हैं? मैंने पाया है कि एनसीईआरटी बुक को लेके दैट कन्विक्शन एंड बिलीफ टुवर्ड्स द बुक इज मिसिंग. बस सभी को पता है कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ठीक से एनालाइज नहीं किया है. बस पता है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़नी है, बट ये नहीं एनालाइज किया है कि इसमें से या इसके अनसॉल्व पार्ट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसके सॉल्व एग्जांपल्स नीट के लिए रेलिवेंट है. पता है एनसीईआरटी पढ़नी है, बट क्या इसके ग्राफिकल पोर्शन ठीक से पढ़ना है या नहीं. यकीन मानिए पायल मैम, if we do our homework in this direction, तो preparation की strategy पूरी तरह से बदल जाएगी. And this sort of scientific analysis is what Aakash EduTV is known for. And we do that scientific analysis based on research, right? And trust me guys, all the viewers, this is going to be the last webinar you're going to attend in this topic. You'll stop NCERT being a webinar physics junkie. Trust me guys, let me repeat it. Yes, let me repeat it again with all belief and conviction. This is going to be the last webinar you're going to attend in this topic. You'll not be a webinar junkie hereafter. So I want to repeat for all our viewers again. I want to repeat for all our viewers again that if they really want all this detailed researched analysis that the faculty has painfully put together and which they bring to the table when they teach at Aakash EduTV, that is where you need to subscribe to this channel. So our experts at Aakash EduTV are known to really put in all of that research that you can easily get when you subscribe to these channels, and then your strategy goes on to the next level. Yes, Naveen sir. Yes, but बात ये है, बात ये है कि ये जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं, दे आर स्टूडेंट ऑफ साइंस. और होता क्या है, फॉर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, अनलेस दे सी एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियरली, दे डोंट बिलीव इट. शायद इन्होंने बहुत वेबिनार अटेंड किया होगा कि यस, यू नो, एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, बट देयर इज अ की फैक्टर कि वो बिलीफ फैक्टर, व्हाई डिड नॉट इट गो डीप इनटू द बोन, ओनली फॉर द रीजन maybe that amount of evidence has not been shown. So if you allow me, today's webinar, we are going to take it in a different level. I would like to share some screen, and I would like to share some points. I have made a detailed presentation, me and my team, and wahan se hame aur bhi, we'll get more better idea about the significance of NCERT with respect to NEET examination. So yes, I'm just sharing my screen. Please go ahead. Yes. So I think my screen is visible. Yes, do you see the PowerPoint presentation? Yes sir. Yeah. So here I have made, and this time it's something very different. आप जरा ध्यान से देखिए. This is the question that I picked from NEET 2020. ऊपर clearly लिखा गया है, and the question has been brought from nucleus. The energy equivalent of 0.5 gram of a substance is. The formula that you have to put while calculating this is E equals to mc square. I think जितने भी viewers हैं, they must be getting excited. But यहाँ मैं आपको न्यूक्लियस पढ़ाने नहीं आया हूँ. My purpose is something different. वो मैं करूँगा आकाश EduTV studio में. I'll certainly do that. You just see below.
NCRT book reference, chapter 13, page 442, solved equation with data changes. And this is a solved example in NCRT book. You just see, calculate the energy equivalent of 1 gram of substance. और यहाँ देखिए, actual question में it had been asked 0.5 gram of substance. In this solved example, there is 1 gram of substance. So there is a little bit of data change, but the formula is same, the methodology is same. बस करना क्या है, 1 gram को 0.5 gram से replace करना है. So the first point has been very clearly showed कि solved examples from NCRT, one by one, you can't risk losing or you can't risk skipping any solved example. So I have some more. It's not only one. I have plenty and plenty. And today I have decided कि after this webinar, I would like to put that conviction part कि बच्चों को ये पता जरूर लगेगा कि NCRT, that's the diamond. You need to follow that. So let's see some more. Right, sir. Sir, I just want to read out a few more questions that are pertaining to this, what we are discussing right now. So, Sumitra Mahato is saying, sir, kya NCRT exercise questions important hai? Sumitra, you will see, and as sir is showing in all these examples, ki exercise questions, solved examples, unsolved examples, wahi se aate hain, sare sawal, right? Abhay Pratap is asking, sir, अभय प्रताप पूछ रहे हैं क्या एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं? अभय प्रताप, आई थिंक सर विल आंसर दैट क्वेश्चन इन अ बिट, राइट सर? One example we have already shown, and that satisfies Abhay Pratap's question. और सुमित्रा का जो question है, just wait. इसी presentation में you would find all your answers of your query. Just hang on with us. And to Sakshi, I want to tell you, Sakshi Dhawale writes, NCERT की language समझ नहीं आती. NCERT की language समझ नहीं आती. उसके लिए भी we have the technique. We'll do that, Sakshi. Don't worry. We have presentation for that as well. Just remain, just stay with us. अच्छा, मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है, मतलब I'm getting that feeling, you know, I'm in a class, because the moment I come with a difficult question, I get so excited face. And Payal ma'am, you know, this is the fuel for teacher. हमें actually ये चीज़ आगे propel करती है. Let's go for the next one. NEET 2020 में ये question आया है. This I have brought from the topic of wave, जो class 11th के ending chapter में माना जाता है. Generally, student का mindset है कि they keep this topic in a, you know, moderately difficult zone में रखते हैं, या difficult भी अगर मैं कहूँ, it's no incorrect. और इस chapter में से beats is one जिसने बच्चों को बहुत ज्यादा तंग कर रखा है. Now just see the question that had appeared in NEET. There is a guitar string and, you know, A and B made of material, so and so frequency, beat frequency has been given, or finally it has asked the original frequency of B. So this question is related to beats. और आप देखें नीचे chapter 15 page 384 solved equation with data change. ये solved example मैंने page number और chapter लिख दिया है for your, you know, reference. और देखिए NCERT में two sitar strings A and B playing the note dha slightly out of tune. आप अगर ठीक से देखेंगे, I think many of have already taken this screenshot. Now they can verify it later. It's exactly the same pattern question. Data change है. NEET examination में there was guitar. यहाँ पर NCERT में there is sitar. Who knows, 2021 में you would get violin or some other instruments. So one more convincing example कि solved examples को किस तरह से कितने sincerity और कितने seriousness के साथ लेनी है. Right. Now we'll go for one more. I have some more. This is brought from Gravitation. Payal ma'am, मैं आपको थोड़ा सा वो दे दूं कि if we are at the surface, if we go higher or if we go deeper, दोनों ही केस में the weight of the body decreases. Right. So question ये है, NEET में आया हुआ, the body has a weight of 72 Newton on the surface. Gravitational force यानी weight पूछा गया है at a depth equal to half the radius of the earth. और मुझे नाम ठीक से अभी याद नहीं है, but someone had raised the question unsolved example. आप देखिए unsolved example from NCERT, assuming the earth to be a sphere so and so, body का weight निकालना है halfway down the center of the earth if it weighed 250 Newton on the surface. तो ये NCERT का question with the page number, it's been there, it's an unsolved one, and the question that had been asked from NEET. Now you can easily correlate how important is unsolved example. And there are more to come. ऐसा नहीं है कि 3 क्वेश्चन से दिखा के I'm going. मैंने पहले ही कहा है, today it's a mission.
ये एक मिशन है, आपके दिमाग में ये चीज स्ट्रांगली पुट करना है. You have to know the significance of NCRT. Another, आप देखिए, this question has been brought from electromagnetic wave. There's a small island. एक छोटा सा टॉपिक है, but that's quite important. ज्यादातर theoretical questions आते हैं, but numerical questions भी आते हैं. And the question in NEET was ratio of contribution made by electric field and magnetic field in terms of intensity पूछा गया है, and the ratio has been given. अब एनसीईआरटी में से अभी तक मैंने आपको सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड एग्जांपल के रेफरेंस आई हैव शोन. ये है विद इन द चैप्टर, द थियोरेटिकल पार्ट समरी के फॉर्म में दिया जाता है, एंड इट्स एन एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट आई हैव टेकन ब्लू शेड में. यू वुड फाइंड पॉइंट नंबर 6. आप ध्यान से देखिए. If you see, electromagnetic waves carry energy as they travel through space, and this energy is shared equally by electric and magnetic field. Yani, the energy component ratio is going to be 1:1. Yani, NCRT के अंदर जो theory दी गई है, you need to follow every theory very properly. और बच्चे ये चीज को ध्यान देना, NCRT, it's a wonderful book. उसमें आपको अंडरलाइनिंग, जरूरत से ज्यादा हाईलाइटिंग, इटैलिक्स ऐसा नहीं मिलेगा. Why you read the NCERT book? ठहराव के साथ पढ़ना है, word by word पढ़ना है, line by line पढ़ना है. And I have a good example for that, reserved for a later segment. But at least अभी एक चीज पता चल गया, from the theory part, from the in-chapter discussion, questions occur. All right, now let's go for the next one. So, Naveen sir, if I were to just interrupt you there, ये अभय प्रताप का एक सवाल था ना कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं क्या, वो आपने अभी शायद आंसर कर दिया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रॉम द थ्योरी कुछ सब कुछ आ सकता है, राइट? Yes, and one more proof for Abhay Pratap, he would be very happy boy today, कि आज आप देखिए ये एक क्वेश्चन है that has been brought from modern physics. Electron has been accelerated by certain potential difference. The de Broglie wavelength of electron given है, we need to find the potential difference. The concept is electron gets accelerated with a speed, produces the matter wave. That's the concept. Let me not go into that. But आप देखें NCERT में chapter 11 page 400 direct formula based. These formula, this is the screenshot from NCERT book. और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको कहूं, अगर कोई स्टूडेंट बस यही फॉर्मूला को देखता है, he or she would be in an impression कि this is a very lengthy calculation because Planck's constant की वैल्यू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 and under root. बट आप देखना इस सभी चीज के बदले में एनसीईआरटी ने देखो आपके सामने रेडीमेड फूड रख दिया है 1.227 by root v. यानी आफ्टर प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द कांस्टेंट, दिस इज दैट रेडीमेड फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन. बस आपको क्या करना है, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रखनी है, या हमारे गिवन केस में लैम्डा की वैल्यू रखनी है. यू विल कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस. तो मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स कहते हैं कि वी डिड नॉट गेट दैट रिक्वायर्ड टाइम, हमें टाइम नहीं मिल पाया व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. वो इसलिए because you did not pay attention to these minute facts which are huge time saver. टाइम बचाना मतलब ऐसा नहीं कि फटाफट हड़बड़ी में आपने करना है, ये नहीं है. टाइम बचाने का मतलब इस तरह के टेक्निकल पॉइंट्स आपने दिमाग में रखना है और बड़े कूलली, कंफर्टेबली, कामली सॉल्व करना है. सेविंग टाइम डज नॉट मीन रशिंग, नो रैश ड्राइविंग. सेविंग टाइम के मतलब कलेक्ट दीज गोल्डन पॉइंट्स एंड यू वुड सी कि विद इन दैट ये आप 30 या 45 सेकंड्स में आराम से सॉल्व कर सकते हैं. एंड लेट मी गो विथ वन मोर. हियर इट इज. आप देखें ध्यान से कि ग्राफ, ये जो है स्पेसिफिकली नीट एस्पायरेंट के लिए, दिस इज अ मैटर ऑफ ट्रबल. बहुत लोग परेशान होते हैं कि ग्राफिकल क्वेश्चन, या पीपल कम अप विथ एक्सक्यूज कि ओके वी आर नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट तो ग्राफ नहीं होगा. बट ऐसा नहीं है. आप जरा ध्यान से देखिए. विद दिस शॉर्ट डिस्कशन आई थिंक आई विल गिव यू दैट रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल. आप देखिए, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड. रेजिस्टिविटी की वेरिएशन टेम्परेचर के साथ पूछा गया है, and the element is copper and copper is metal. NCERT में chapter 3 page 104 में ये तीन ग्राफ्स दिए हैं. Let me focus on the first one, and it says this is how the variation of resistivity goes with respect to temperature, and this is for metal or copper being a metal. यानी exactly the same graph has occurred और आपने क्या करना है, ऑप्शन सी में टिक करना है. Now the point is, जब भी आप ग्राफ पढ़ेंगे
प्लीज 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 डोंट डू दिस कि ग्राफ को मेमोराइज ना करें, एक एक चीज को मेमोराइज ना करें, यू वुड फॉल इन द बर्डन, उतना बोझ आप नहीं सह पाओगे. What you got to do is that the concept behind the plotting of the graph you need to understand. Graph is made for our simplicity. हमें तंग करने के लिए नहीं बनाया गया है. It says that a figure is equivalent to 1000 words. Is given graph में there are so many different meanings hidden, like relaxation time of a metal decreases with increase in temperature, and because resistivity is inversely proportional to temperature, uh, relaxation time, so therefore resistivity increases with respect to temperature. जब आप ये ग्राफ पढ़ेंगे, इस ग्राफ के पीछे की कहानी पढ़ेंगे, हाउ डिड समवन कम टू दिस कंक्लूजन, ये ग्राफ हाउ डिड समवन प्लॉट इट, अगर आप ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे, एक्चुअली रिमेंबर स्टूडेंट, ग्राफिकल क्वेश्चन जो आपके डिसएडवांटेज था या आपको डिफिकल्ट लगता था, अब यही आपका स्ट्रेंथ बनेगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट. यस. और यकीन मानिए ग्राफिकल क्वेश्चन के लिए करना कुछ नहीं है, बस देखना है, फटाफट पता चल जाएगा, यू वुड टेक इट. सो इट विल हार्डली रिक्वायर 5 सेकंड, और यही तो आपने करना है, जो आपकी कमजोरी है, जो आपकी वीकनेस है, यू गॉट टू ट्रांसलेट इट इनटू स्ट्रेंथ. और वो आप तब करोगे व्हेन यू अंडरस्टैंड द ग्राफ, यू टेक द टाइम, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग. बट अभी भी आई रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड्स, नीट कैंडिडेट मेमोराइज ना करें, अंडरस्टैंड करोगे, एफर्टलेसली दिमाग में आ जाता है. रिमेंबर द वर्ड एफर्टलेसली. तो अभी तक का जो थिंग्स दैट आई हैव शेयर्ड सो फार, this must have certainly given a nice idea that how important is NCRT. We have understood, we have seen कि solved examples में किस तरह से data change होके questions आते हैं, unsolved में से कैसे आते हैं, और because we have a limited time of 1 hour and we have other things to cover as well, ये बस sample है. और ये आपके लिए इट्स अ एक्सरसाइज फॉर यू. आज घर जाके यू जस्ट ट्राई टू सी हाउ मेनी क्वेश्चंस और किस तरह से कैसे वेरिएशंस आए हैं. यू वुड बी सरप्राइज्ड, एंड द बिलीफ एंड फेथ एंड कन्विक्शन टुवर्ड्स द बुक विल राइज मैनीफोल्ड. I must admit, sir, that this has been an eye-opener for me as well, particularly for our viewers, I hope, who are preparing for NEET. आपने इतने painstakingly जो एक example slides में put up किया with the exact chapter number, page number. So I think इससे बढ़िया evidence हमारे viewers को क्या मिलेगा कि NCERT से सवाल आते हैं और किस तरह अलग-अलग तरह के सवाल आते हैं. तो हमारे सर ने, नवीन सर ने अभी तक के लिए जो जो पॉइंट्स बोले हैं, आई होप बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको गौर से सुना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स आर हिडन इन ईच एंड एवरीथिंग दैट ही सेड. एंड इन आई जस्ट बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन, नवीन सर, आई जस्ट लाइक टू पिक अप अ फ्यू क्वेश्चंस that have come our way now. Sure. Aditya Dwivedi writes, sir, how much marks we can score in physics in NEET exam by solving NCERT only? Okay, we'll talk about that abhi, but technically it is entirely आप solve कर सकते हैं. But अगर मैं safer zone में भी जाऊं, 45 questions तो आप 45 में से 40 questions तो आप बड़े आसानी से solve कर सकते हैं, because those 5 questions, what I say is that they are made by merging multiple concepts. और उन क्वेश्चंस को भी कैसे हैंडल करना, फॉर दैट देयर इज अ सप्लीमेंट्री बुक फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहते हैं. तो इफ यू सॉल्व द एनसीईआरटी थ्योरी बुक एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, इट्स माय गारंटी यू कैन सॉल्व ऑल द 45 क्वेश्चन. पर ध्यान से देखना, एनसीईआरटी को सुपरफिशियली नहीं पढ़ना है, ठहराव के साथ वर्ड बाय वर्ड मीनिंग ढूंढना है. सो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड. Right. Just taking up one more question, sir. Shruti Gupta writes, sir, what are the chapters of physics for which we can't skip NCERT at this last time? I think ये जो few months are left, उसके चलते they are saying. नहीं, there is none. अगर आपने पहले NCERT नहीं किया है तो अभी के लिए नोट करें, don't go into the theory first. पहले solved example सब करें, unsolved example सब करें, और उतने करने के बाद यकीन मानिए you would have much amount of time remaining, and after that start going into the theoretical portion, अगर आपने पहले NCERT नहीं किया है तो.
Right. So Anush Chokara, I hope that answers your question as well. Anush ने लिखा था सर पूरा theory कैसे पढ़ेंगे in just 2 months. Actually, I never touched NCERT. So Anush, I really hope आपको ये वाला webinar पहले मिला होता. You would have understood the importance of NCERT. अभी भी I think you can really pack the punch. Nothing is late. जल्दबाजी ना Yeah. करना, pick up the chapters और एक एक करके word by word भी करेंगे. आज से आप एक टारगेट बनाइए, या आपके लिए एक मैं अच्छा तरीका दे देता हूं. सपोज 2 महीने आपके पास टाइम है, think it's 1.5 और रिवर्स कैलकुलेशन कीजिए कि इतने टाइम में if I got to finish this many chapters, you start making the reverse calculation कि अच्छा per day I need to finish 1 chapter. Then you start doing on this. आप कर लेंगे. Don't worry at all. Just one more question before we move on to our next section, sir. हेमंत पाल पूछते हैं क्या एनसीईआरटी और आकाश स्टडी मटेरियल नीट के लिए काफी है? Yes, absolutely, without any doubt, yes. और इसके बारे में अभी shortly in the next segment we'll be talking about that. So all right, हेमंत, आपको बहुत एक forceful, vehement answer मिल गया है कि एनसीईआरटी और आकाश का स्टडी मटेरियल is enough for your NEET preparation without any doubt. एक चीज मैं आपको बताऊं पायल मैम, हेमंत के लिए आई वुड लाइक टू पुट अ स्पेशल मैसेज. ये दुनिया में अंडर न्यूट्रिशन के कारण से कम, ओवर न्यूट्रिशन के कारण से लोग ज्यादा मरते हैं. ओवर न्यूट्रिशन मतलब आप लगा लो डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ऑल बिकॉज मोर कैलोरी गेटिंग इनटेक. यस. तो ये देखना, आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं हेमंत, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कौन से किताब फॉलो कर रहे हैं, जस्ट लिव इट. आप एनसीईआरटी और आकाश के स्टडी मटेरियल पूरी तरह से करोगे, यू वुड थैंक मी बॉय. नाउ आई वुड लाइक टू रिमूव ऑल द क्लटर. दीज आर द 2 टारगेट्स. इसको ठीक से करें. नीट फिजिक्स इज योर्स. राइट. आपके इस स्टेटमेंट से आई थिंक मोहिन और इस्लाम के दिमाग में एक सवाल आया था कि विच इज द बेस्ट बुक फॉर फिजिक्स एनसीईआरटी. तो आई थिंक उनको भी अपना जवाब मिल गया है. फॉर फिजिक्स नीट, सॉरी, विच इज द बेस्ट बुक फॉर फिजिक्स नीट उन्होंने पूछा था, तो उनको जवाब आई थिंक मिल गया है कि एनसीईआरटी एंड आकाश मटेरियल. Right. So, sir, we now go into our next section of today's very informative discussion that we are having, which is अभी तक तो आपने ये suitably, I hope, बच्चों के दिमाग में भी और जो भी parents watch कर रहे हैं हमारे इस session को आज, ये suitably establish कर दिया है कि NCERT is very important for your NEET preparation. Yes. Now, I think the next important thing is how should one prepare from NCERT? I think ये सवाल बच्चों को बहुत अभी आ रहा होगा उनके दिमाग में भी. How should one prepare? Actually, you have brought a question which is a burning question. But एक चीज है, at least 50% of my viewers, maybe they have already received the idea and they must have developed a strategy by this time कि okay, NCERT को इस तरह से पढ़ना है, because we have shown the convincing proofs of that. But now the second thing is that it's an unfortunate part. ज्यादातर केसेस में बस स्टूडेंट्स को यही इंफॉर्मेशन मिलती है कि एनसीईआरटी पढ़नी है. व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द प्रोसेस, इसको स्टेप बाय स्टेप एक यूजर मैनुअल की तरह कैसे बनाया जाए, लेट मी ट्राई टू डिस्कस. आई थिंक दैट्स योर क्वेश्चन, राइट मैम? एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल. So the first thing is that I have, I think maybe 5 or 6 points में मैं इसको sum up कर सकता हूँ. Point number 1, start with the theory. Read it. थ्योरी पढ़ने के बाद राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. ये बहुत जरूरी है. और जब आप पढ़ेंगे, रिमेंबर यू आर रीडिंग अ फिजिक्स बुक. जल्दबाजी में नहीं करना है. वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप, आराम से पढ़ते हुए जाना और इनमें से हिडन मीनिंग्स को निकालने की कोशिश करना. अब आप पूछेंगे कि ये हिडन मीनिंग कैसे निकाले. लेट मी जस्ट ट्राई टू शो अ पैराग्राफ फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ. And let me go for the screen sharing. So for that, all right. So here it is. कैसे पढ़ना है theory को? This is the given part. So here it goes. Is it visible, ma'am? Yes, it is. Yes. So I have brought a topic which is scattering of light. NCERT ऊपर I've written it. It's page number 335, and it comes from the topic of ray optics. आप जरा ध्यान से देखना थ्योरी को कैसे पढ़ा जाए. और ऐसे भी क्वेश्चंस आए थे कि वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. दिस इज हाउ यू नीड टू रीड. मेरे पास कर्सर है, आपके हाथ में पेन होगा
और एक एक इस तरह से, दिस इज हाउ यू नीड टू रीड, दिस इज द यूजर मैनुअल. As sunlight travels through the Earth's atmosphere, it gets. आप जरा ध्यान से देखना, this word is italicized. Normally, italics word या bold letter NCERT में कम मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद if you are getting, इसका मतलब this is a very important term. अब अगर मैं इसको पढ़ूं तो मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा it gets scattered, ऐसा नहीं कहूंगा, it gets scattered. So there is a stress. The book wants कि इसको ध्यान से देखो, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, ये बुक की भाषा है, वो कह रहा है कि गिव इंपॉर्टेंस टू मी. और देखिए कि स्कैटर्ड क्या है, ब्रैकेट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, यानी स्कैटर्ड को मीनिंग दे दिया है बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स. नाउ वेट फॉर अ मैजिक. आपने करना क्या है, इसके बेसिस में आई जस्ट शो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है. कैसे? लाइक theoretical question आ गया, the process of change in direction of light when it hits the atmospheric particle is option interference, diffraction, scattering, refraction. तो आप देखें यहां पर scattering. तो इस तरह से ठहराव के साथ पढ़ना है. You need to find out the meaning of that. और you just see from first sentence itself एक potential question आ गया है, और ऐसे ही तो questions आते हैं नीट में. अगला sentence, let's go. Light of shorter wavelengths is scattered much more than light of longer wavelengths. यानी आप देखो, such a beautiful phenomena. यानी scattering सभी के लिए. अब आप दिमाग में कैसे करेंगे, how would you introspect कि scattering सभी के लिए uniform नहीं है. Lesser is the wavelength, more is the scattering. This is what you would say. And to go further, आप ऐसे देख सकते हैं Vibgyor में, okay, violet has a lesser wavelength. That means violet will get more scattered as compared to red. So you need to have an internal conversation, एक self talk होना चाहिए. अच्छा, इस बात से बिल्कुल परेशान मत होना कि ओके इससे तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है. एट द एंड दिस प्रोसेस पेज ऑफ. आप दोबारा उसको 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे जस्ट बाय डूइंग हसल रीडिंग, कोई फायदा नहीं है. जितना करे ठीक से करे, एंड ट्रस्ट मी, बिलीव मी, बड़े आराम से कर सकते हो. अभी भी यू हैव दैट मच ऑफ टाइम रिमेनिंग. I think Naveen sir, ये जो आपने अभी example दिया, how to read the text, I think this is a aptitude that will help them in all subjects. I mean, in life in general also, going beyond the obvious, how to read the hidden. You have, yes. Yes. So, am I audible to you? Yes, yes. Okay. So, there's a very wonderful point आपने pick किया है. These students are preparing for NEET, and finally NEET will lead them to the white apron. Right. As a doctor, आपको चीज रेडीमेड सामने नहीं मिलेगा. लेट मी गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल. ये जो आदत आप डेवलप करोगे, ये जो हैबिट आप इनकलकेट करोगे, दिस इज गोइंग टू पे यू लाइफ लॉन्ग. कैसे? आई जस्ट टेल यू. Absolutely. You should have the ability, yes, to see the unseen. मान लेते आप रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में गए, और आपके क्लिनिक में या आपके हॉस्पिटल में या पेशेंट कम्स, उसे टेक्निकल टर्म्स पता नहीं है, उसे मेडिकल जार्गन्स और लिंगो पता नहीं है. वो तो बस यही आके कहेगा कि डॉक्टर साहब आई गेट अ हेडेक, या शाम को हमेशा मुझे 6 से 8 के बीच में मुझे बुखार आ जाता है. दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंस यू गेट. तो उस गिवन फैक्ट को आराम से सुन के, ठहर के सुन के, हाउ कैन यू मेक अ कंक्रीट साइंटिफिक कंक्लूजन. दैट इंटरनल प्रोसेसिंग, दैट सेल्फ कन्वर्सेशन पार्ट, अभी से अगर आदत डालेंगे, remember, trust me, this is really, really, really going to pay you off. You would start seeing the unseen. English में कहावत है ना, reading between the lines. Right. ये आदत बन जाएगी, और वही मटेरियल किसी को बस उतना ही दिखेगा, लेकिन आपको उसके पीछे की कहानी, आगे के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यू स्टार्ट फाइंडिंग ऑल दोस थिंग्स, एंड ट्रस्ट मी, रीडिंग बिकम्स फन. उसी गिवन इंफॉर्मेशन से, उसी गिवन आर्टिकल में से आप ढेर सारे इंफॉर्मेशन निकालेंगे, और यही तो चाहिए आपको, अभी के लिए, बाद के लिए भी. तो अगर बाद में आपको एक्सेल करना ही है, तो अभी से आदत क्यों ना डाले, राइट? एब्सोल्युटली. और ये एक ऐसा स्किल है, आई फील नवीन सर, जो इनको थियरी में से जो हिडन क्वेश्चंस आते हैं उसको टैकल करने में बहुत ही हेल्प करेगा. यस. और एक चीज है, अब नीट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं. आई रिमेंबर अ वेरी वंडरफुल एपिसोड 2 years बैक. अभी वो जो स्टूडेंट है, ही इज इन एम्स. नाउ फॉर प्राइवेसी रीजन आई वुड नॉट लाइक टू टेक द नेम.
तैयारी की शुरुआत में, he's in AIMS Delhi right now. तैयारी की शुरुआत में, it had just been 6 months of his beginning, class 11th में. तो he came to me after giving a test और उसने ये कहा कि सर आपने तो कहा था कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में से न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, एनसीईआरटी में से थ्योरी भी आएंगे, बट देखिए ये जो क्वेश्चन है आई डिड नॉट फाइंड इन एनसीईआरटी. देन आई सेड, क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए मैम, विद ऑल ह्यूमिलिटी, इट्स बिन मोर देन 1.5 decade, तो याद है कि एनसीईआरटी के कौन से पेज में क्या पैरामीटर्स है. आई सेड दैट गो एंड गेट द बुक. देन आई सेड, अब जरा ध्यान से देखना, एक टिपिकल प्रॉब्लम जो नीट एस्पायरेंट फेस करते हैं, बिकॉज ऑफ कंपेरेटिवली लेसर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एक्चुअली वो भी नहीं होता है. उन्होंने मान लिया है कि हम मैथ्स में कमजोर है और नहीं है. आई हैव सीन पीपल विद ब्रिलियंट एप्टीट्यूड ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, तो what happens is that physics के अधिकतर क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन, दे कम इन द न्यूमेरिकल फॉर्मेट. और एनसीईआरटी में ऐसा तो नहीं है कि हर पॉइंट के लिए आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट दिया जाता है. सो यू नीड टू हैव दैट स्किल कि वो जो थियोरेटिकल क्वेश्चन को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कैसे आप कन्वर्ट करें. फॉर एग्जाम्पल, एंड व्हेन आई शोड इट टू दैट स्टूडेंट, it was an eye opener to him. Believe me, he was happy because he got, I could see the joy in his eyes. अब जरा ध्यान से देखिए, एक और चीज देखिए. A bracket में, if you can see the cursor, the amount of scattering is inversely proportional to 4th power of the wavelength. देखिए ये सेंटेंस के फॉर्म में दिया गया है, लेकिन इसी को न्यूमेरिकल लैंग्वेज में दिया जा सकता है. इट्स जस्ट अ लैंग्वेज कन्वर्जन. द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज, प्रोपोर्शनैलिटी साइन कर दे, 1 upon lambda square, 1 upon lambda cube, 1 upon lambda 4, 1 upon lambda. तो आप देखिए, दिस इज 1 upon lambda raised to the power 4. तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मैथमेटिकल लैंग्वेज. बगल में आप लिख दें तो होता क्या है, थ्योरी भी आप पढ़ेंगे और उसके प्रोबेबल मैथमेटिकल फॉर्मेट कैसे आ सकता है, इवन दैट थिंग वुड बी क्लियर टू यू. सो एक काम करते हैं, उससे पहले आई जस्ट टेल रिवील कि एनसीईआरटी में से नीट 2020 में डायरेक्ट क्वेश्चंस विद लिटिल बिट ऑफ डेटा चेंजेस, देयर वर 40 क्वेश्चंस, 40 आउट ऑफ 45. वो 5 भी, देयर वाज समथिंग मिक्स्ड ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, जो कि फ्यूजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, बट 40 questions directly. So someone who had said 160 or 170, I congratulate that your study, your understanding is very keen. But बाकियों के लिए it was 40. Now who knows this time वही होगा, या तो 41 होगा या तो 39 होगा directly. But indirectly इस तरह से आप जब meaning extract करने लगोगे, आप पाएंगे कि 45 में से 45 ही questions थे. So that is the part. And yes, ma'am, I would like to take apology. मैं टीचर हूँ, तो आप कहेंगे कि सर आप वेबिनार में भी क्या कर रहे हैं. होता क्या है ना, क्लास लेने के बाद बगैर होमवर्क दिए, we don't feel satisfied. So this is the, if you allow me. Sure. So sir, let me give a homework to students. This screen, if you are done explaining, then we'd like to see you in the big screen again. अगर आपको इसी screen में yes, but अभी के लिए yes, just a minute. Sure. Within a second. NCRT page 335 में से all the viewers, आपके लिए homework है, at least 10 questions यहाँ से extract करना है. I said at least. More number is कितने भी हो सकते हैं. This is the homework for you. This is the target that has been given to you. I wish कि checking mechanism भी हो, but इसमें आप अपनी ईमानदारी रखिए. So this is the part that you need to do. और ये exercise करने के बाद you would find a different meaning about NCRT. Wonderful, Page wonderful. 335, class 12, scattering of light. That is the article. You got to extract at least 10 questions from that. So I hope all our viewers have got that homework down. Page 335, you need to extract 10 questions from that explanation, the theory that is given there. And to get such wonderful tips and all the researched analysis that Nabeen sir has been able to bring out to you today, remember, you get it on Aakash EduTV channels 467 and 478. And to subscribe, you need to give a missed call to 9154052467. Yes, Nabeen sir, just continue. Yes, ma'am. The question, that was a very, important question that you have raised, कि NCERT को कैसे पढ़ना है. The first point we have done, कि start with the theory, और theory को कैसे पढ़ना है, I think that demonstration would be sufficient. Point number 2,
पिक द सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी और उसके अप्रोच देखें, उसके मेथडोलॉजी देखें, solve it. Remember that 1 gram substance into energy, 0.5 gram substance into energy. Solved example से कैसे directly question आया था. So now Right. you can't risk to miss it. But एक चीज है, while you do the solved example student, जो method book में दिया गया you follow that. लेकिन उसके अलावा try innovation. उसी क्वेश्चन को क्या किसी और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है या नहीं, try to give a think. use your brain cell, use a gray cell. और आप देखेंगे it's physics is so wonderful. किसी एक चीज में पहुंचने के लिए you have multiple paths. Like simple example, किसी पार्टिकल की velocity निकालनी है, you can go by the kinematics method, या हो सकता है you can go by the laws of motion अगर available है, या वही velocity या speed निकालने के लिए you can go with work energy method, you can go with linear momentum method. Try to see कि क्या क्या options है. जब आप देखेंगे एक गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव सो मेनी डिफरेंट स्ट्रेटेजी. द फिजिक्स लर्निंग इटसेल्फ वुड बी अ जॉय, और फिजिक्स पढ़ाने वाले आगे से बदनाम नहीं होंगे. सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मुझे आई रिमेंबर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर सेड मी कि आप फिजिक्स पढ़ाते हंस कैसे पाते हैं. So I said, ma'am, ऐसा नहीं है कि हम बोझ तले डूबे हैं. There is a technique. If you have the right key, you can easily open it up. Or you need the right key, you become, burdenless. It becomes enjoyable. तो शुरू में practice करें. Please don't just get satisfied by the book method. Try out alternative technique. सीखेंगे. और नहीं होगा तो भी पता चलेगा, okay, this is the limitation of that method. Remember Thomas Alva Edison, what he said, that I didn't fail 1,000 times before inventing the bulb. I knew 1,000 ways how a bulb does not work. So Right. knowing this method is insufficient, that's also a part. Point number 3, study the graphs carefully. They are very, very important. जैसे मैंने आपको एक example दिखाया था, the variation of resistivity with respect to temperature. लेकिन I said study the graph. I didn't say रट्टा मारो the graph. मैंने ये नहीं कहा है. Guys, what you need to do is that उस graph understand the graph. Yes, graph के पीछे के theory देख के, and remember I had used the word. Otherwise, graph आपके लिए एक weaker point है, but if you understand and do it, it turns into advantage. 5 सेकंड में आप फटाफट पहचान करके कर सकते हैं. और नीट में बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है. जहां मैं जेई एडवांस की क्लासेस लेता हूं तो वहां पर ग्राफ है, तो सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, कनकेव अप, कनकेव डाउन, मैक्सिमा, मिनिमा, ऐसे क्वेश्चंस नीट में नहीं आते. आप एक काम करो, सारे ग्राफ को ठीक से अंडरस्टैंड करोगे, you would not find an unseen element. So let me repeat, we have more point, but start with theory. Next is pick the solved question and see the alternative method as well. Point number 3, study the graph carefully. Point number 4, एक easy giveaway marks है units को लेके. Lots of question you find जहां units conversion पूछा जाता है, like 2019 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलोवाट आवर में कन्वर्ट कैसे किया जाए, that had been asked. या हमेशा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा where you got to find the dimension of a physical quantity. हो सकता है thermal conductivity, Stephen's constant, mobility, any given thing. तो जो भी चीज आप पढ़ते जाएंगे उसके डायमेंशनल फॉर्मूले को प्रैक्टिस जरूर करें. That's one sure short question. Point number 5, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, उन्हें बहुत ध्यान से देखना. लाइक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन का मतलब experiments of simple pendulum, resonance column, meter bridge, potentiometer, you name it. ऐसे बहुत सारे experiments हैं on and on. तो उनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं because the exam conducting body, they keep one thing in mind, they want to give a practical exposure. और practical exposure का मतलब क्या है? जो भी experiment related question है, experiment related articles है, you need to do that very very carefully. और एक चीज जो एक क्वेश्चन बहुत आया था कि क्या एनसीईआरटी के अलावा कुछ और क्वेश्चन या कुछ और बुक करनी है. लेट मी गिव, नाउ दिस इज अ वेरी सिंसियर पीस ऑफ एडवाइस. सम सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, they find NCRT के examples are sufficient enough, they get that concrete theory. But ऐसे बहुत सारे viewers हैं जो मुझे पता है, उनको ठीक है सर हमने NCRT कर लिया है, but that required amount of confidence नहीं आ पाया है. So we need some additional material. तो अगर आप आकाश के स्टडी मटेरियल सब्सक्राइब किए हैं, that's the best thing. और आकाश के स्टडी मटेरियल में NCRT के थ्योरी में से
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के भी दिया गया है, और इफ यू हैव एनी अदर स्टडी मटेरियल एज वेल, आप उसे ठीक से करें, वो एक एडिशनल बूस्टर डोज होगा। और जब आप एनसीईआरटी के अलावा कोई और स्टडी मटेरियल करते हैं, अब जरा ध्यान से देखिए, यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू एनसीईआरटी। अब जब आप स्टडी मटेरियल कोई और स्टडी मटेरियल कर रहे होते, वहां जब आपको एक क्वेश्चन दिखेगा which is related to the concept given in NCERT, which is related given to the solved example of NCERT, उसको खास attention से करना है, because you know this has a high probability of coming into the examination. तो NCERT आपको एक आइडिया दे देता है, the gold mine दे देता है, you need more practice और स्टडी मटेरियल से करें, but not at the cost of living NCERT. And I would again like to repeat, मुझे फिक्र है कि कहीं ये चीज छूट ना जाए इनके दिमाग से, so I would again like to repeat it. कोई और स्टडी मटेरियल करते हैं, वहां एनसीईआरटी से रेलेवेंट रिलेटेड क्वेश्चंस मिले तो उनको खास अटेंशन देना। एंड एट द एंड जिनके ज्यादा एपिटाइट है, who wants a high intensity training, आप exemplar book कीजिए, you'll find lots of questions there and they are really really wonderful. So this is how you need to follow the methodology, the user manual, how you read NCERT. जब आप शुरू करेंगे, आप अपना स्टाइल, अपना टेक्निक खुद डेवलप करेंगे, यकीन मानिए फिजिक्स इज रियली 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 गोना बी वेरी एंजॉयबल व्हाइल यू रीड इट। Right. I'm sure with all the tips that you shared today, Naveen sir, and the way you make it all sound so easy, a lot of our viewers who feel that physics is a very difficult subject, they will now think differently about it. I think जो आपने आखिरी में जो point बोला sir, the emphasis has been on the importance of practice, right? तो जितना practice करेंगे, उतना उनका speed and accuracy दोनों चीजें strong हो जाएंगी, right? Yes, ये एक चीज मैं आपको कह दूं, ये सारे डिस्कशन का ये मतलब नहीं है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है। दैट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक इंट्यूशन डेवलप हो जाता है, एक रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है। सो द प्रैक्टिस पार्ट इज वेरी मच एसेंशियल। यू हैव करेक्टली अंडरलाइन द पॉइंट। Right, sir. So we have about 7 odd minutes now before we come to an end to this webinar. I'll quickly like to take a few questions. So Amrit Kaur ने पूछा है कि ग्राफ से कितने questions आते हैं? ग्राफ के कितने questions आते हैं? ग्राफ के कितने questions आएंगे? That would be a very wrong thing कि मैं आपको 3 कहूं और अगर 3 नहीं आए, you're going to sue me. But ग्राफ को पढ़िए, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही। लेकिन जब वो ग्राफ को आप पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स आपको मिलेंगे, दोज आल्सो आर अ पोटेंशियल क्वेश्चन। तो जस्ट डोंट सी द डायरेक्ट पार्ट, लुक एट द डेरिवेटिव ऑफ दैट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल सर, ये समटाइम्स, सॉरी, आई थिंक देयर इज अ लिटिल लैग, इफ आई मे जस्ट sometimes even I used to wonder in the textbooks there is a section called points to ponder. तो आदित्य ने पूछा है कि सर व्हाट अबाउट पॉइंट्स टू पॉन्डर, उसको कितना करना है आदित्य? वो जो क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जहां एनर्जी इक्वली डिवाइडेड था, दैट हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट्स टू पॉन्डर। और इस बार भी आप देखेंगे देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन दैट हैड कम फ्रॉम पॉइंट्स टू पॉन्डर। और वो तो आपके लिए एक क्रिस्टलाइज्ड कॉन्सेप्ट दिया गया है, बल्कि दैट गिव्स यू अ क्विक व्यू ऑफ द एंटायर चैप्टर। तो दैट्स अ बून। मतलब वो बनाने के लिए बहुत मेहनत हुई होगी। I'll shortly share a small story. John F. Kennedy, who was a very children friendly president माना जाता था. So a kid came to John F. Kennedy and she said कि can you help me Mr. President, एक essay लिखना है for my English homework. So he said I'll certainly do. The kid said 150 words. John F. said that come tomorrow. The kid said नहीं, 50 words. John F. said then come a week later. So she said कि 50 words, you're calling me after a week. Then he said within that 50 words I have to put and summarize the entire thing. So giving anything in a precise manner is much more difficult. The points to ponder is the conclusion, summary, the crystal of the entire chapter. उसको ना छोड़े, that's a blessing. उसको छोड़ना नहीं है। Right. राइट सर, नेहा कुमारी का एक क्वेश्चन है। आई थिंक नेहा कुमारी, ये हमने वैसे एड्रेस कर दिया था। शी इज आस्किंग, इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आल्सो इंपॉर्टेंट स्पेशली इन केस ऑफ फिजिक्स?
यस, अगर आप वो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस को मतलब जो 45 में से 45 को सुपर फ्लो में करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी करें, बट पहले प्रायोरिटी मेन एनसीईआरटी बुक को करें। एग्जाम्पलर भी करेंगे, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, दैट वुड बी द केस। राइट। सारा गुप्ता पूछती हैं, सर, आर 15 years previous year questions, are they enough? नहीं, इनफ नहीं है। दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट, बट दैट इज नॉट इनफ। इनफ नहीं है, नेसेसरी बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। Right. So I think we'll take one more question from Pirzada Abrar, who's asked, how much importance of theory in physics and derivation of formulas? फॉर्मूले डेरिवेशन के बाद जो रिजल्ट आते हैं, यू विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। इस बार 2020 में 7 क्वेश्चंस आए थे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, और एक सैंपल मैंने दिखाया भी था डिब्रॉय वेवलेंथ से रिलेटेड। तो डेरिवेशन के जो कंक्लूजन रिलेटेड पार्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और थियोरिटिकल पार्ट, वी सॉ द एग्जांपल पेज 335 स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वहां से आई हैड शोन यू कि थियोरिटिकल पार्ट में से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल आपको दिखाया था। सो दिस हेंस प्रूव्स that the theoretical part are very much important. Right. Thank you so much for answering this question. And to my viewers who've just joined in or joined sometime back, I would once again like to tell you about Aakash EduTV. Aakash EduTV is the initiative from the House of Aakash on Airtel DTH. You have these 2 channels, channel 467 and 478, which are dedicated exclusively to your preparation for NEET and JE. You get live lectures, you get recorded lectures on these channels at a very, very affordable rate of 8 rupees 23 paise per day only. So, आकाश के 33 साल की पढ़ाई आपके घर टीवी पर आई. So, and as you can see, Nabeen sir is faculty at Aakash EduTV, and he puts in his entire passion when it comes to making physics easy for everyone. All the research, all the analysis that goes behind the questions in NEET, all of that you will get very easily from the experts at Aakash EduTV. So to subscribe to this channel, as I said, if you are already an Airtel DTH subscriber, all that you need to do is give a missed call on 9154052467. And for those of you who do not have an Airtel DTH connection now, this is probably your cue. You don't want to miss out on the expert tips and advice that you'll be able to get so easily, beaming straight into your home on a television set at Aakash EduTV. Aakash EduTV, as I said earlier, is an initiative to help you bridge the gap between the school level teaching and the teaching that happens in the coaching. So in a way, Aakash EduTV prepares you for the real coaching that you will be eventually joining to fulfill your dreams or to reach your dreams of becoming a doctor or an engineer. On that note, I would like to thank all our viewers today, and thank you, Mr. Nabeen sir, for so wonderfully explaining each and everything and making this session so interactive, engaging, and joyful. I'd like to thank everyone, and stay tuned to this channel for more such wonderful sessions on Aakash EduTV.